पूरा इसकी रीजनिंग एंड द कम्युनिटी बिहाइंड इट मुझे एक ख्वाब में आया. नो देयर इज अ वेरी वेरी लकी गर्ल, एक्चुअली आई एम द लकी गाय. इसीलिए तो मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये आसान होता तो मैं करके बैठ जाता. बोला यार अब क्या. आई थिंक इट्स given that you need a consistent and solid partner in your life. यार love is in the details. God is in the details. एक छोटा सा चीज will keep me up at night, you know, and I'm like से मैंने मंजिल इतनी ऊंची चुनी है कि बस उसको पहुंचते पहुंचते मर जाऊंगा. like पैसा कहाँ से इतना ज्यादा आ रहा है, like नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा. मतलब सीधी बात है. Startup यार. It's a startup यार. It's a startup culture. When you've brought yourself back up, it teaches you lessons life will not teach you otherwise at all. I feel like we're on the cusp of greatness. I mean, you said it, sis. Like, I love this country, and stick with the ones that help you grow. Yep. अगर पैसे बनाने बैठा होता ना तो मैं बहुत बना चुका हूँ. I'm like, bro, just इंतजार करो. You're the world builder, तो मैं universe builder हूँ. गोल है कि जो आज मेहनत कर रहा है उसको बूस्ट करो, उसकी मदद करो, उससे भी लो और उसको भी दो, और फिर 5 साल बाद देखो कि आप सब किधर जाके खड़े होंगे. अस्सलामुअलैकुम खाउतीन और हज़रात, एंड वेलकम बैक टू माय शो हेलो ज़ेरा, जिसकी होस्ट मैं हूँ उल्टी पुल्टी उर्दू स्पीकिंग ज़ेरा. और आज जो मेरे साथ बैठे हुए हैं उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत जगह बनाया है जिनके हमारे हार्ट्स में है, बिकॉज इट इज़ अ स्पेस फॉर आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव्स टू कम एंड अनलीश देमसेल्व्स एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स विदाउट एनी जजमेंट ऑफ एनी काइंड. एंड जो बैठे हुए हैं वो भी ये जगह को बुलाते हैं अ गिफ्ट टू कराची, एंड आई थिंक द सेम. और बहुत ही एक फ़नी गेस्ट है, बहुत ही स्टाइलिश गेस्ट है और बहुत ही मज़ेदार. एंड आई वुड लव टू वेलकम टू द शो शामिर हाशमी. Pleasure is all mine. No, honestly. Pleasure's mine, man. No, it's absolutely... It is actually yours. It is mine. No, it's absolutely great to be here. I actually love the setup, love what you do. I've been following what you've been doing for a really long time. Oh my God. And honestly, that intro couldn't have done it better myself. Yeah, good. और याद है हम मिले थे आपके इवेंट पे, और आप और जब मैं मिले थे ना, it was like we've known each other for years. I know, right? You know, जैसे आपका energy तो था, तो I was like, you know, ये मेरा new best friend है. I swear, I was so excited, looking forward to having you here. Honestly. And तो मुझे बताओ यार, like what inspired you to create Neutral? I have no idea anything about much about you. Much about me, हाँ. Yeah. यार, I'll tell you. Actually, बहुत एक क्लीशे सा होता है जब भी कोई मुझसे पूछते हैं न्यूट्रल का आइडिया कैसे आया. I tell them यार एक बड़ी फनी कहानी है. एक्चुअली मुझे इसका पूरा लेआउट, पूरा इसकी रीजनिंग एंड द कम्युनिटी बिहाइंड इट मुझे एक ख्वाब में आया था. नहीं. हाँ. Like सपने में. हाँ, सपने में ख्वाब में सो रहा था, और फिर हल्के रोज मैं उसके बारे में सोचे जाऊँ. I went to my dad. हमने प्लान सोचा. अच्छा, शुरू से लेके एंड तक ना उनको लगे जा रहा था कि मैं एक शादी हॉल बना. मैंने बोला देखें भाई, इवेंट स्पेस है, फंक्शंस हो गए, ये सब होगा, म्यूजिक होगा, शादी मंगनी भी हो जाएगी, सारा हो जाएगा. हो सकती है. It makes for, we've had engagement parties, they're very cute सी type. Sweet. It's all very cute. दुआ करें मेरा भी हो जाए. इंशाल्लाह मैं भी अपनी वही करूँगा, सब उधर ही करेंगे. तो बस वो हल्के आइडिया बिल्ड होता रहा. Tell me that ख्वाब में ये आया था आपको. So are you a spiritual person, religious person? जैसे अल्लाह से बहुत कनेक्शन है आपका? हाँ, काफी. हाँ, अल्लाह का बड़ा सीन है यार. अल्लाह का बड़ा सीन है यार. Shout out to God, honestly. Nicest way I can put it. Honestly, it all started with spirituality, and fortunate enough to be born in a family जहाँ religion को पुश नहीं किया जाता इतना, मगर बहुत एक अच्छे बेस लेवल पे समझाया जाता है. Nice. फॉर मी, मेरी और अल्लाह की सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप ये है कि वो मुझे सब्र देते हैं.
और मैं उस सब्र का अजर निकालता हूँ। अजर निकालते हो, wow, what does that mean? यार कुछ है कुछ deep है, you know, I'm sure they, but damn, that was amazing, and I totally Yeah. feel that I think that आपको वो understand करना Yeah. चाहिए, accept करना चाहिए. तो if you had to describe neutral in one word, what would you? Neutral. That's it. Of Speaks course. for itself. तो ये नाम कैसे आया आपको? यार बड़ा फनी कहानी है। हाँ. Was this guy Virgil Abloh? Yeah. क्रिएटिव डायरेक्टर था लुई विटॉन का। हाँ. उसने कहावत कही थी, he was like I can spend a lot of time making a candle or I can design the room that it sits within. तो यही मेरा आई थिंक वो था कि द आइडिया इज वेरी सिंपली कि यार जो आपकी एक जगह है उसको इतना खूबसूरत, इतना प्लेन, इतना मिनिमल बनाओ कि वहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड दैट्स व्हाट माय इवेंट्स एट न्यूट्रल आर। बार बार उसको यही बोलता था यार कि ब्रीफ के अंदर होना चाहिए कि न्यूट्रल टोन्स एवरीवेयर, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। वो इतना मुझे लगता है पक गई थी मेरा ये न्यूट्रल सुन के कि उसने जब मेरे लिए मॉकअप बनाया ना, तो जो मेन एंट्रेंस के ऊपर हमारा साइन लिखा आता है उसमें उसने न्यूट्रल ही लिख दिया। और बड़े लाइक हम बड़े नाम सोच रहे थे क्योंकि द स्पेस इज इन क्लिफ्टन। मैंने तो एक बार ये भी सोचा था इसको क्लिफ्टन कम्युनिटी सेंटर लिखेंगे। Oh God. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वो नहीं हुआ। Yeah, please यार, तो I'm not coming there. हाँ, I don't want to be there, exactly, man. I don't want to be बिल्कुल caught there, man. फिल्टरिंग हो जाती थी ना। तो बस फिर वो नाम चिपक गया। चिपक It's गया। stuck. It's Neutral. stuck. I love the name. It By the way, I was wanted to tell you so that it's a good. beautiful name. Thank you. It's, you know, kick-ass. और मेरा फोकस भी ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर। कोई भी एक्टिविटी होती है, कुछ भी होता है, तो मैं यही बोलता हूँ कि यार इसको एक कोलैबोरेटिव बेस पे होना चाहिए। जी। आई नेवर ट्राई कि यार वो अच्छा काम कर रहा है, एक काम करते हैं उसका आइडिया चुरा के इन हाउस करके जो है ना करने की कोशिश करते हैं। दैट्स नॉट इट एट ऑल। मैं उस बंदे को ढूंढता हूँ जो वो कुछ कर रहा है, क्योंकि उसने भी अपनी दिल और मेहनत लगाई है उस काम में। आई एम लाइक यार ये काम इधर लाओ, हम कोलैबोरेट करके कुछ नया इसके अंदर से वील स्केल इट। हम आपका बिजनेस स्केल करेंगे। बिल्कुल। हम हमारी ऑडियंस आपकी, आपकी ऑडियंस हमारी, ताकि हम सब एक बड़ी ऑडियंस बन जाए। आमीन आमीन। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। I love that about you. मैंने ये फील किया है that आप बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। हमारा तो मॉडल भी बहुत फनी है। आप सोचें कि मतलब मैं अगर पैसे बनाने बैठा होता ना तो मैं बहुत बना चुका होता। इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही थी that like पैसा कहाँ से इतना ज्यादा आ रहा है, like you know नहीं आ रहा यार नहीं आ रहा, मतलब सीधी बात है। स्टार्टअप यार, it's a startup यार, it's a startup culture यार, यही सीन है। यही you know, मेरा भाई मेरे कमरा में आता है, वो बोलता है यार तुम इतनी अच्छी काम करती हो, लेकिन यार you know like you know पैसा कहाँ से आ रहा है? I'm like bro just इंतजार करो, एक दिन मैं तुम्हें खरीद लूंगी तुम्हारा पूरा जिंदगी। एग्जैक्टली मी। मैंने भी यही बोला यार कि आप देखें, आप बस इंतजार करें। बहुत सब्र का गेम है भाई, बहुत सब्र का गेम है। और मैं तो बहुत जिंदगी में सब्र सीखा है। I've lived a very very interesting life actually. I feel कि मैंने पहले सोचता था कि यार मैंने काफी झक मारी है, बहुत ज्यादा ना, बहुत झक मारी है। झक मारना क्या था, चिल्लिंग गुजार दिया, मस्ती मजाक बहुत पढ़ता था पहले, फिर पढ़ना छोड़ दिया चिलिंग में दोस्त यार। तो एज सच मेहनत नहीं की जी, क्योंकि डायरेक्शन नहीं मिली जी। बिल्कुल। बहुत क्रिएटिव आदमी था, मगर वही होता था कि बहुत ज्यादा ही क्रिएटिव आदमी जब हो जाता है ना, उसको किसी चीज में मजा ही नहीं आता है, वो बोर हो जाता है। ये तो है, बहुत जल्दी बोर हो जाता है, बोर हो जाते हैं। क्रिएटिव लोग they can't do the same thing again and again। हाँ, और माशाल्लाह से मतलब घर वालों ने भी पैम्पर करके रखा हुआ था इस तरह का कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर बोर हो भी गए तो ठीक है कुछ और कर लिया। इन एनी केस तो फिर यार फिर एकदम से मेहनत करने का भूत सवार हुआ। एंड राइट नाउ इवन विद न्यूट्रल मेरे आई एम वन गाय रनिंग द एंटायर शो, मोस्ट ऑफ इट, बिकॉज मेनली विजन ही मेरे जहन में है, वो मैं जितना भी, और वो विजन एवर चेंजिंग है। बिल्कुल। तो मैं कुछ करता तो आई ट्राई टू डिप माई टोज इनटू एवरीथिंग आई फाइंड। जो मुझे काम दिखे थोड़ा मजे का, जो मुझे समझ आया यार ये क्रिएटिव इंडस्ट्री है, इसमें जाओ पैर डालो, हाथ प्ले करो। तो बस आई थिंक आई एम ट्राइंग हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स
meeting thousands of people, and for me, honestly, ठीक है, पैसे is an important factor, बिल्कुल. but अगर आपका एक थोड़ा सा बस काम चल भी रहा है ना, for me payment इतनी काफ़ी है कि I get to be on this show. I meet every day, मुझे 100 लोग मिलते हैं, इतने talented कि मैं आपको बता नहीं सकता. हर तरह का टैलेंट है और मारे घूम रहे हैं, और मैं उनको देखता हूँ, एंड आई कैन टेल उनको देख के कि यार तुम जो है वो थोड़ा सा सब्र कर लो, इंतजार कर लो. मुझे दिख रहा होता है कि वो बड़े बन जाएंगे soon enough. एंड हम उनको उस प्रोसेस में एड करने की कोशिश करते हैं. जी बिल्कुल. यही मेरा गोल है कि जो आज मेहनत कर रहा है उसको बूस्ट करो, उसकी मदद करो, उससे भी लो और उसको भी दो, और फिर 5 साल बाद देखो कि आप सब किधर जाके खड़े होंगे. बस जब मैंने ये सुना ना आपसे, I know you're different, Shamir. What kind of leader do you think you are? Because अभी तो जो आप दिखते हैं बहुत cool है, बहुत relax है, लेकिन मुझे पता है when you're leading a team you have to be firm also. Yeah. तो मुझे बताएं आप कैसे करते हैं जब कोई mistake हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो respond कैसे करते हैं? यार I would like to say कि obviously ये जो हमारा काम है ना, ये करते कराते हो जाता है कि आपकी नर्व्स स्टील हो जाती हैं. दुनिया का सबसे बड़ा मसला भी हो, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है. वाओ. आप बैक एंड पे हैं, वहाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं. मेन मकसद आपने समझना है कि लोगों की एंजॉयमेंट नहीं रुकनी चाहिए. आपका कोई मसला होता है वो बैक एंड पे हल होते रहना चाहिए. जी. When it comes to a leader, I think the most important thing is कि आपको काम रहने की आदत होनी चाहिए, which is what I try. काम होना चाहिए, लोगों का मोरल बूस्ट करना चाहिए. जब भंड हो जाता है उसको चुपचाप बोलो कि देखो बात सुनो, अभी तुमसे हुआ है भंड मतलब मिस्टेक. हाँ. तुमसे हुआ है अभी भंड, हाँ. अभी तो तुम इसको सॉर्ट करो, हाँ. हम उसे बाद में देखेंगे. उसके अंदर ही वो जो टाइम पीरियड होता है ना, जिसके बीच में उस बंदे की इतनी फटी रहती है कि वो सेल्फ डेवलपमेंट खुद ही हो जाती है. जैसे नहीं अम्मी अब्बू बोलते थे बेटा आप जो है ना घर जाके हम आपसे बात करेंगे, और पूरी कार राइड आपकी फटी होती थी. That's basically the type of leader that I would like to say I am. कि नहीं यार, don't be the bad guy, बस फाड़ो. Make sure people understand the importance of what it is you are doing. Yes. That's basically it. The why. The intention. You have to understand the why. Basically मैंने आपको बोला मेरी टीम बहुत छोटी है. जी. क्योंकि मैं अपने सर पे ये काम नहीं ले सकता कि मैं 20 बंदे खड़े कर दूं, उनको मैं ट्रेनिंग दूं, उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है. वो उस दिल से काम. It's way more stressful. और ये तो खैर एक different conversation है. The stresses I face right now कि यार delegation बहुत एक difficult task. How can you trust? You know, इसी कभी कभार मैं कुछ देती हूँ, फिर मैं मुझे वापस आता है, और फिर I'm not like you, like I'm learning it over time. I'm also learning it. लेकिन मैं इतना मेरा काम को, even sometimes I hate myself that why do you care so much about the details? Like मैं रोना शुरू कर दूंगी, like alone in my room, just looking at a small mistake, and I'm like, why can't you just let it go? You know, like ignore it. I can't. And that's it. Like I love that about myself, but I hate that about myself, because I'm like, yaar, एक छोटा सा चीज will keep me up at night, you know, and I'm like, oh, this cannot continue, but it has to, yaar. It's just the way I am. Like I know, same, like detail oriented, and that's what it is. It's all in the details, yaar. Love is in the details. Exactly. God is in the details. मतलब आपको जो देखने वाला होता है, समझने वाला होता है, उसको छोटी छोटी चीज में प्यार समझ आ जाता है कि यार कितना किसी बंदे ने सोच के काम किया, और वो अप्रिशिएट करता है उसको. It goes a long way. I really hope Details so, go really long way. और मैं आज तक अपने पूरे पेज की सोशल मीडिया मैनेजमेंट खुद करता हूँ. Nice. I love your page aesthetic. Thank you so much. बहुत cool है, बहुत calm है, बहुत you know chill vibes. Like. अगर आपने वाकई में इतना डीप स्टॉक किया है, मैं कुकिंग वीडियोस बनाता था. यार of course कुकिंग वीडियोस बनाता था, और हाथ सिर्फ तो बोल रही है नहीं, this is some lady's hand. I was like, no dude, that's his hand. यार he's cooking, उसको कुकिंग पता है, उसको शौक है. फिर मुझे आपका एक पोस्ट नजर आया जहाँ आप एक बारबेक्यू कर रहे थे और कोई बैंड प्ले कर रहा था,
और आपका बारबेक्यू इतना जबरदस्त लग रहा था और मैं सोच रही थी यार टेल मी अबाउट योर शॉक ऑफ कुकिंग I love it. एंड रेस्टोरेंट कब खोल रहे हो आप? नहीं खोल रहा नहीं कभी भी नहीं खोलूंगा. मेरे पास ऑप्शन थी जो मैं आपको न्यूट्रल की वजह वो एक रेस्टोरेंट हो सकता था. हो सकता था, क्यों नहीं. हाँ बट मैं आपको बताऊं, कुकिंग itself is something that is so sacred to me, so close to my heart, कि मैं कभी उसको इस जेपर्डी में ही नहीं डालूंगा कि मैं उसका धंधा शुरू करूं, जी। बिजनेस शुरू करूं. नहीं, हाँ. ठीक है, कंटेंट क्रिएशन और मतलब स्टूडियो और ये सब जो अच्छा है, मतलब आई लाइक इट इनफ कि मैं इसका बिजनेस करूं, और कभी कभार दिन पक भी गया तो ठीक है, फाइन. हाँ खाना बनाने के साथ मैं ये नहीं कर सकता. दैट्स द वन थिंग जो मेरे इतने दिल के करीब है कि वो मेरा एस्केप है, नो मैटर व्हाट. वाओ. मैं आज अगर जिंदगी में मेहनत कर रहा हूँ हाँ. तो मैं सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि मैं एक बहुत बॉम्ब एस किचन बनाऊँ अपने लिए, ठीक है, और मैं बस रिटायर हो जाऊँ जल्दी, और मैं रोज अपने दोस्तों को बुलाऊं खाना और और मैं मुझे भी बुलाएं. हाँ Of हाँ हाँ. course. I love feeding people. Really? I It's your love language it's to my feed complete people. love language. आप Aw. सोचो कि जब मेरे दोस्त आते हैं तो मैं उनको बोलता आ जाओ बॉयज, किचन में आ जाओ, Oh. किचन में, और बस बैठो हाँ, और मैं कुछ बना और बैठे रहो, और मैं किचन में रहता हूँ और बस मैं बना रहा होता हूँ, वो खिलाता हूँ, और जैसे ही वो होता है तो मैं और बनाता हूँ और खिलाता हूँ, और मतलब बनाता हूँ और खिलाता हूँ, बनाता हूँ. Wow, यार that's हाँ, beautiful. क्योंकि एक आई थिंक जो एक हाथ से काम करने की कला होती है ना इंसान के अंदर, वो बहुत ड्राइव करती है लोगों को. एंड आई लाइक आई सेड, वी आर प्लानर्स. जी. तो वो प्लानिंग हाथ की कला उसके अंदर नहीं आती है, बट द कुकिंग एस्पेक्ट ऑफ इट, आई लव इट सो मच. इट्स सो, कुकिंग टू मी इज द मोस्ट Therapeutic. no dude, it is the most creative expression known to man. 3-4 साल पहले मैं फ्राइंग पैन से डरता था, मुझे अच्छा, नहीं? हाँ मैं बोलता था जल जाऊंगा भाई, कोई सीन ही नहीं है. No way. कोविड, So you COVID, learned cooking in yeah. COVID and you fell in love with it in COVID. yeah. You're kidding. yeah, COVID best time of my life. I'm so sorry Wow. for the mashallah. people जिनके लिए वो एक बुरा वक्त था, सबके लिए था, but For you learned about yourself. literally, आपने अपने आप को हाँ. uncover किया, Yep. discover किया. Yep. And ये इतना खूबसूरत चीज़ है जो आपने बोला जा यार मैंने कोविड में सीखा कुकिंग, हाँ, और हाँ. अभी आपके दिल के इतना करीब है वो Yeah, चीज़. हाँ. तो that means at any age we can always learn something Yeah, new. We can always take for up something new. sure. जैसे मैं सोच रही थी जैसे मुझे अरबिक पढ़ना है, मुझे कुरान पढ़ना है इन अरबिक, तो आई वाज लाइक यार लाइक अरबिक तो मुझे नहीं आता है, हाँ. बट मैं कहीं तो शुरू करूँ, Exactly. क्लासेस में ले लूँ, तो मे बी इन 5-10 years I can do it. यार ये पता है, ये बड़ा मसला है, और ये एक इम्पेंडिंग चीज रहती है जहन पे कि यार आप अपने इर्द गिर्द देखते हो लोग बहुत टैलेंटेड हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह, और रोज बरोज और टैलेंटेड होते जा रहे हैं, जी बिल्कुल. और एक कम उम्र पे भी करते जा रहे हैं, तो एक इट पुट्स यू डाउन कि यार वो तो ये कर रहा है, एंड तो हर पॉइंट पे अपने वो आप करके आ रहे हैं. हाँ. हर पॉइंट पे अपने आप को ये बताना बहुत जरूरी है कि इट्स लिटरली नेवर एवर टू लेट फॉर एनीथिंग. Yes. हाँ, आप Like- what was your first impression? आपका पहला Like impression? 24 types. Okay, I'm exactly 24. You're 24? हाँ, Really? yeah, very young. Oh, are you actually? Yeah. Oh, you're a baby, dude. You're a baby. मैं काफी छोटा हूँ. Wow, mashallah. So then there's a long way, mashallah. Inshallah, you will really be big. Oh, I love that. और मुझे बताएं न्यूट्रल स्कूल ऑफ म्यूजिक क्या है? Oh, मुझे very नहीं समझ आ रहा exciting. था. हाँ, हाँ. मुझे बिल्कुल बताएं A to Z. यार, न्यूट्रल ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट वेन्यू Of course. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है. बट उससे ज़्यादा मैं फोकस करना चाहता हूँ एजुकेशन के ऊपर. या डिज़ाइन किसी भी क्रिएटिव एजुकेशन इज़ व्हाट वी कैन कॉल इट. Wow. ठीक है, I was like, यार एजुकेशन का काम अच्छा है. हाँ, Creative education is the education. way forward because Exactly. अभी तो courses जा रहे हैं इतने Yeah. जबरदस्त YouTube पे, like बिल्कुल. लोग are more shifting towards infotainment या हाँ, edutainment, जैसे exactly. कुछ learn तो करें. वही मैं देना चाहता हूँ साथ साथ मतलब. तो न्यूट्रल स्कूल ऑफ म्यूजिक इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म प्लान जो कि हम अभी बना रहे हैं. इट्स कम्प्लीटली कोलैबोरेटिव ठीक है, मॉडल. ठीक है, जो लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं हम उनको ला रहे हैं, उनसे काम करा रहे हैं.
I think this is where you're gonna start making the money, because sub classes I'll Basically, sign up. Like, you know, हाँ. like we're ready. Like, Yeah. you know, this is really a good And idea. then- And eventually it can be like school of art, you know, जैसे music हो Exactly. गया, videography भाई, हो गया, ये हो गया, वो वो. यही है ना. I love that idea, It's a by the way. I'm one-stop very proud of solution. Really like comprehensive plan to bring education and paired with that. And I hope to go to schools and universities and colleges and turn it into an off-site activity center. Because that is the way to go forward. And honestly, आपके अंदर बहुत वो फायर है, एंड इंशाल्लाह आप बहुत कुछ करने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में. सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी जब आप ये कर रहे थे, और कभी ऐसे कोई टाइम आया जब आप सोच रहे थे यार मैं नहीं करने चाह रहा हूँ और मैं गिव अप करूँगा, और यू नो मैं like I'm just gonna pack it in. हर वक्त. हर दिन. अभी तो I बहुत know काम it. आसान हो गया. आप सोचो, क्योंकि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ गया. हाँ जब मैं बना रहा था द कंस्ट्रक्शन फेज, बिकॉज एक तो फैमिली इन्वॉल्व थी, जी. पैसे इन्वॉल्व थे, Of course. ठीक है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था. तो यही था कि यार ये बना क्या रहा है, ये कैसा लगेगा, ये एक नॉर्मल आम हॉल की तरह क्यों नहीं बना रहा, ये वाइट टाइल्स क्यों नहीं कर रहा, ये सीमेंट फ्लोर क्यों बना रहा है खास. बहुत छोटी 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 चीज़ें थीं जिसके अंदर मतलब रोज़ एक बहस होती थी कि यार ये कर क्या रहा है ये इंसान. अब तो काफ़ी हद तक लोग ठंडे पड़ गए हैं कि देर लाइक अच्छा ये तो कूल है. कूल है. हाँ. बड़ों को समझाना भी मुश्किल होता है, अपने आप को समझाना, दोस्तों को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि यार ये मैं ये कर रहा हूँ. मैं कर रहा हूँ. बोलते हैं पागल हो गए हो क्या, हाँ. तुम्हें पता है कितना मुश्किल है. मतलब हाँ मुझे पता है इतना मुश्किल है, इसीलिए तो मैं करना चाह रहा हूँ. हाँ. क्योंकि अगर ये आसान होता तो मैं करके बैठ जाता. बोला यार अब क्या. देखो मेरा एक मेंटर बता रहे थे हाँ. मुझे दैट आसान होता तो सब लोग करते हैं. या It's the heart that makes it great, you know. It's Exactly. the heart that makes you stand मतलब out. And I'd say मैंने यही है. मंजिल ही इतनी ऊंची चुनी है कि बस उसको पहुंचते 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 जाएंगे. मर जाऊंगा. I know it, dude. I know Motivation it, for man. life, dude. I swear, bro. Like it's like, you know, you do one thing, you're like yes, yeah, and then you're like, oh my god, यार इतना और बाकी है यार, क्या करना है. अभी बहुत कुछ you know बाकी है like यार. many more steps to take till I sleep. यार सो आपकी लव लाइफ के बारे में थोड़ा बताएं. Who's the lucky girl or guy? No, I'm kidding. no, there's a very, very lucky girl. Actually, I'm the lucky guy. Oh, wait, yeah. there is a lucky girl in your Of life. course there is, yeah. Bro, तालियां यार. we're doing long distance. Oh no, she's real. हाँ, yeah, She's she's real. totally real, fully. Long Fully, distance. Okay, yeah. okay. कैसे मिले थे आप लोग? यार, There's a lucky I'll girl, tell I'm the you lucky the guy. real. Oh, that's so sweet, yaar. Mwah. I'll tell you the real story later. Okay, okay. Off But camera. when we just met. And fell in love. Two friends, we're friends, kind of fell in love ish. Really, really funny story, but we've seen a lot together. And I think the reason that I stay so motivated, the reason कि मैं यहाँ तक भी पहुँच गया हूँ, I think it's given that you need a consistent and solid partner in your life. Are you serious? Yeah, dude. Are you serious? नहीं यार. Nah, you thought सच I was बताओ all यार. gonna be single for life and that Yeah, time. I thought you were gonna be bro. single for life, bro. नहीं भाई, आपको जरा एक इंसान चाहिए जिससे आप दुनिया दूर राब्ता करके करके, आप हाँ. it's just you and them against the world, however long. हाँ, she's not part of the entertainment industry at all. She's academia. उसको मेरी दुनिया समझ ही नहीं आती है. जबरदस्त. मुझे उसकी दुनिया नहीं समझ आती. तो बस एक बहुत ये ही बहुत जबरदस्त. it's lovely. That's beautiful. It's very nice. यार मैं यही कहता हूँ आपका अच्छा. Once again, it doesn't have to be a girlfriend, a wife, or whatever it is. But जिंदगी में एक consistent partner होना बहुत Yeah, बहुत I have my ज़्यादा therapist ज़रूरी on है. speed Yeah, dial. your therapist. You know, siblings are great. अगर आपके Siblings. parents इस तरह की relationship हो जाती है बहुत. Because to me now, you know, like she's not just my girlfriend, she's my family. Because we want to, inshallah, we might get married soon. इंशाल्लाह Yeah. ताला. And मैं तो भी आऊंगी. बिल्कुल, मैं हाँ. आपका खाना खाऊंगी. मेरी शादी बहुत मैं late होगी, gift bro. लेके आऊंगी. हाँ, बहुत इंशाल्लाह. बहुत सेक्सी शादी करूंगा मैं. Sexy बहुत शादी मजे की होगा, I'm होगी. sure. हाँ. But mashallah, that's so beautiful to Yeah. hear.
Wow, It's yaar. very important. That's यार so good, होना yaar. चाहिए. I'm so proud. This is my favorite thing. This is everyone's so proud. सब लोग clap करें, हाँ. Thank you, thank you, Wow, thank you, wow, thank you, wow. thank you. Yeah, that's the reason I made it this far. Mashallah. So you've been with this partner for a while. Yeah, it's been 3 years. OMG, Becky, and you didn't Yeah, ruin yeah. it. No, bro, he's going strong. Congrats, dude. Congrats, dude. That's huge, man. I'm proud of you, especially ye time and age mein to find, It's people that very- are serious, to Yeah. find people that are compatible and for the right reasons. So, bara, it's something to be Yaar, actually, I'm gonna proud get of. a bit emotional over here, actually. please. हाँ, तो I wasted my entire college life. पूरी ज़ाया, zero, पढ़ाई लिखाई करने के अलावा मैंने सब कुछ कर लिया because there's a lot of bad influences out in the world. Lots of them, and they come directly at you जब आप 18-19 साल के होते हो. The reason I think I've lived so much, I've seen so much is क्योंकि मैंने इतना टाइम ज़ाया किया है, मैंने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ गंवाई हैं. I have brought myself to such a low place in my life that getting back up to where I am, alhamdulillah, today, and so far to go as well, but it takes a lot. It takes the life out of you. It takes the mehnat out of you. But it gives you infinite wisdom. When you've brought yourself back up, it teaches you lessons life will not teach you otherwise at all. उन बैड इन्फ्लुएंसेस से दूर रहे, जिधर उसको उन बैड इन्फ्लुएंसेस की ज़रूरत ना पड़े. वो बोले यार मैं तो सोबर ही इतनी अच्छी चीज़ कर रहा हूँ. My life is good this way. I don't need those influences. Like drugs and stuff. Yeah, drugs and shit. Literally, like drugs are bad. Drugs are bad. Don't Drugs do are drugs bad, because yaar. once you do them, bro, it's hard. Then. Drugs are bad. मतलब ठीक है बंदा करता है, but it's a very slippery slope, and you Slippery should slope तो है. you should have an alternative. Alternative नहीं है. There's a ceiling. मैं ये like वो आप पाकिस्तान में 4 पैसे कम कमा लो, आपका स्टैंडर्ड थोड़ा कम हो जाए, आप जो भी कर रहे हो आप थोड़ा कम कर लोगे, आपके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, मगर जो भी कर रहे होगे आप अपने लोगों के लिए कर रहे होगे. Right. और जब आप अपने लोगों को जो है ना फ्लरिश करते हुए देखोगे, इंशाल्लाह in a more selfless world that we are headed to, hopefully, it will be really good, and you can then very, very proudly say that, hey, I was Part of this change. part of this change. I want And to, I am gonna be part of this I change. want And to you're gonna be part lead of the this change, dude. We're gonna lead the That change, is what bro. I want to do. Lead the Basically, change. अल्लाह lead करे the way, bro. इसी Like, चीज़ का तो मैं सब्र मांगता हूँ कि बस यार I don't take that heavy decision, जो कि मुझे पता है कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं होती, जी बिल्कुल. क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है, but till I have the option I'm gonna milk every single आमीन bit और of it. मुझे एक थॉट आया था जब इंशाल्लाह 15-20 years में एक जब हम मिलेंगे Yeah. और बात करेंगे, हम Yeah. बोलेंगे यार रिमेम्बर जब हम वो बच्चे होते Yeah, थे और चेंज yeah, yeah. अभी हम कर रहे हैं और देखो Exactly. सब हम लोग ने हाँ. तो आई फील दैट amazing yaar. So first just Zabardast. Okay, so should we play a game? Yes. What city is famous for hosting the Coachella Valley Music and Arts Festival? Shit. A, Is it? Okay. Austin. Okay. B, Palm Springs. C, Indigo. Mm-hmm. Or D, Los Angeles. It's Los Angeles. Is that your final answer? Yes, it is. Are you locking that in? Yeah. Are you sure? Yeah. What if it's incorrect? I don't think it is. Are you sure? Is it right or wrong? It's incorrect. Shit. It's Is Indigo. it fucking Indigo? I haven't even heard of this. I know, that's why I asked you. It's really hard. Even I was like, I've never heard of I was just like, oh, Los Angeles Valley, Of course. Valley. Yeah, Valley. I was like Los Shit. Angeles for My sure. bad. Okay, rapid fire questions. Okay, shoot. Okay, fine. Morning or night? Morning. Oh, okay. Yeah. Coffee or tea? Chai. Chai. Okay. Shah Rukh Khan or Salman Khan? I don't care about it. Shah Rukh Khan. I'll Shah answer Rukh. for you. Okay. Brad Pitt or Leonardo DiCaprio? Leo. Leo. Yeah. Okay. Myra Khan or Deepika Padukone? Myra Khan. Myra Khan forever, bro. Yeah. Myra Khan forever. Okay. Priyanka Chopra or Angelina Jolie? Priyanka whatever happened to her. What happened to her? I don't know. Then she started making those like songs, and I just didn't like her. Okay, anymore. after Yeah, yeah, fine. yeah. It's so exotic. Exotic, yeah, no, yeah. Before all of that, Okay, I fine. loved her. Okay, fine. Yeah. Okay, yes. Okay.
Ranveer Singh or Fawad Khan? Ranveer Singh is the coolest guy. He's the in the coolest world, guy, honestly. dude. Okay, Amitabh Bachchan or Tom Cruise? Big B. Big Big B. B, Big B, Big B. Big B, yeah. Big B. Amitabh Bachchan fan over here. Oh, Love it. yes. Okay. Meryl Streep or Julia Roberts? Meryl Streep is so good. Good. She's so So good. good. Okay. Jennifer Lawrence or Emma Stone? It's a hard one. It's a hard one. That's why I put it. Ooh, it is because she's so cute. She's so hot. Gosh, She's so they're cool. both Yeah. really hot. Yeah. Emma Stone. Emma Stone. Stone. Okay. Because she was also Mary Crazy. Jane in the Crazy Fun Love or something? No, she was also in the Spider-Man movies, no? Yeah. She's so good, and she looks so good when she's blonde, when she's redhead, and all of that. Yeah. Love And Emma she's Stone. so sweet, you know. She's she so looks so good. sweet, and as a person, she seems really Yeah. good. Also, La La Land. Hmm. Yeah. Okay. Yeah, I didn't really yeah. understand that movie, but I just saw the trailer. okay. It's It's really really good trailer. Happy birthday, dear Shamir. Happy birthday to me. Make a wish and cut the thing. Woo. Okay, done. Okay, amazing. Okay. You want to cut the cake? I do want to cut the cut it, cake. cut it, cut it. Reborn every day. You're reborn every day, honey. And Thank you inshallah, so keep many more much. This is milestones so together, of course. I saw that you were giving people this in the world. Oh, so cute. Oh, there's more. Yeah. Oh my god.